Chameli Devi Jain Award for an Outstanding Woman Journalist 2019. Arfa Khanum Sherwani. Arfa Khanum Sherwani, the joint winner of the Chameli Devi Jain Award for Women Journalists 2019, has spent nearly 2 decades in broadcasting and is currently senior editor at the news portal The Wire. She has covered various elections, reported from conflict zones, from Kabul to Iraq, always taking care to introduce her audiences to the politics of despair and the politics of backlash that have created those conflicts. In this connection, her insightful investigative reports about the rise of private militias and growing sectarian and caste clashes in the town of Gorakhpur and the brutal suppression of the revolt of beleaguered Dalits and tribals in Sonbhadra, one of the most backward districts of Uttar Pradesh, are remarkable. In 2019, Arfa was one of the first journalists to visit the Kashmir Valley after the revocation of Article 370. She reported frequently from inside the valley at considerable risk to herself since the area was in a state of total lockdown. In all her body of work, Arfa comes across as a sensible, good listener and a truthful reporter of what she has witnessed. She can dive into the minds of the deprived, marginalized and often brutalized groups to reveal the heart of real India, where a struggle for equality, independence and autonomy goes on ceaselessly. She also documents the failures of the democratic state, detailing who have bent democratic institutions and how, marginalizing the already weaker sections of our society. Arfa's work presents to us an honest, balanced sheet of where we stand as a democracy today, and also how, since democratic aberrations are always man-made, they can be corrected while there is still time. For her grit and honesty, she richly deserves the award named after Chameli Devi Jain, a gutsy freedom fighter whose spirited support for Gandhian values of truth and non-violence in the face of police brutality and incarceration remain a beacon for us all. The Media Foundation is honoured to salute Arfa Khanum Sherwani with the Chameli Devi Jain Award for 2019. Today is a day of great happiness for me. I'm humbled. Thank you for this tremendous honor. This award comes at a time when the government is strengthening its control over information. Instead of upholding transparency during the pandemic-induced crisis, it is muzzling reporters, suppressing free speech, and criminalizing dissent. False cases, frivolous FIRs, police violence, and the use of investigative agencies. These are some of the methods being used to intimidate independent media in India and suppress the truth. All this to deprive citizens of their right to be informed about what is happening around them. While there have been attacks on press freedom before, what is different this time is that a section of media has literally become an extension of the government's propaganda machinery. But there are others, journalists and media platforms who at great personal risk are still questioning the government, reporting the facts and raising the concerns of the marginalized sections. And for this, they are often portrayed as enemies of the state. तो इस घुटन भरे अंधेरे खौफनाक माहौल में कैसे कोई पत्रकार अपना काम करेगा? क्या भारत में पत्रकारिता की मौत नज़दीक है? मैं कहती हूँ यही तो वक्त है जब हम पत्रकारिता की वो किताब, वो पवित्र किताब फिर से उठाएं जिसके हर पन्ने पर ये जड़ा हुआ है कि हम और हमारा काम कितना ज़रूरी है। ये हमारे पेशे का महत्व और ज़रूरत ही तो है कि सत्ता अपनी पूरी ताकत और अहंकार के साथ हमारी आवाज़ कुचल देना चाहती है। यही वो ज़रूरत है जो मेरे जैसे पत्रकारों को कंप्लीट ब्लैकआउट के बावजूद सरकार की मर्जी के खिलाफ हर खौफ और ख़तरे की परवाह किए बिना कश्मीर ले जाती है और मैं भारत के संविधान और नागरिक अधिकारों की लाइव हत्या अपने कैमरे में कैद कर पाती हूँ। यही वो जिम्मेदारी है जो भारतीय लोकतंत्र के हाशिए पर रह रहे दलित, आदिवासियों, मजदूरों, मुसलमानों की कुचली हुई आवाज़ों तक मेरा माइक और कैमरा पहुंचता है और उन कहानियों के जरिए लोकतंत्र के सूरज की कुछ किरणें उनकी अंधेरी गलियों और अंधेरे जीवन में शायद पहुंच पाती हैं। लोकतंत्र में यही विश्वास वो एक अदना से नागरिक को वो ताकत दे देता है कि शाहीन बाग की मुट्ठी भर महिलाओं ने सत्ता के अहंकार को चुनौती दी और भारतीय समाज की अंतरात्मा को जगाया। सीमित संसाधन और सीमित पहुंच द वायर जैसे छोटे मीडिया संस्थानों को
कि अपनी हदें ज़रूर हैं, लेकिन हम अपनी हदों की परवाह नहीं करते, अपनी जिम्मेदारी और ज़रूरत को पहचानते हैं। हमारी जवाबदेही किसी नेता या सेठ के प्रति नहीं, उन करोड़ों पाठकों और दर्शकों के लिए है जो स्वतंत्र पत्रकारिता का समर्थन करते हैं। और इसका एक खास उदाहरण मैं आपको देना चाहती हूँ कि किस तरह से हमारे दर्शक हमारा समर्थन करते हैं कि YouTube के कमेंट सेक्शन में नीचे कई बार मैंने दर्शकों को देखा, उन्होंने कहा कि 200 रुपया महीना हम आपको देते हैं, असम के हमारे फलां इलाके से आपने खबर अभी तक कवर क्यों नहीं की है, या छत्तीसगढ़ के आदिवासी बिल्कुल इलाके की एक महिला, एक लड़की लिखती है कि मैं अपने पॉकेट मनी से 100 रुपये आपको हर महीने पे करती हूँ, मेरी खबर अभी तक क्यों नहीं चली है। इसलिए हमारी जिम्मेदारी सिर्फ हमारे पाठकों और दर्शकों के प्रति है। इसलिए हम जानते हैं कि हमारे लोकतंत्र के जिंदा रहने के लिए जरूरी है मीडिया का जिंदा रहना, उसकी जमीन का जिंदा रहना। जरूरी है सत्ता की आंख में आंख डालकर सवाल पूछना। जरूरी है ताकत के नशे में मदमस्त निरंकुश होते शासकों को उनका राजधर्म याद दिलाना। जरूरी है नफरत और बदले की भावना के गहरे कुएं में धकेल दी गई एक पूरी पीढ़ी को आवाज लगाना और याद दिलाना कि ये लोकतंत्र हमने कितनी मेहनत, कितनी मशक्कत से अर्जित किया है। इस लोकतंत्र की इमारत को खड़ा करने में हमारा खून पसीना लगा है। देश का सबसे गरीब नागरिक एक एक ईंट बनकर इस इमारत में लगा हुआ है। ये देश राजनीतिक पार्टियों का नहीं, हमारा और आपका है। सरकारें आती जाती रहेंगी, आती जाती रहेंगी, आती जाती रहती हैं। ये देश हमेशा था, हमेशा रहेगा। मुझे खुशी इस बात की है कि मुझे इस सम्मान के लिए चुना गया, लेकिन मुझसे कहीं ज्यादा मेहनत और खतरा उठाते हैं कस्बों, गांव देहात में छोटे कहे जाने वाले वो पत्रकार जिनका काम मुझसे कहीं ज्यादा बड़ा है। ट्विटर, फेसबुक पर उनके लाखों फॉलोअर्स तो नहीं हैं, लेकिन वो बड़े खतरे उठाकर खबर का एक छोटा सा टुकड़ा आप तक लेकर आते हैं। इन्हीं पत्रकारों की बदौलत भारत में पत्रकारिता जिंदा है। ये अवार्ड पाकर मेरी खुशी इसलिए भी दोगुनी हो गई है कि ये सम्मान सिर्फ मेरा नहीं बल्कि हिंदी पत्रकारिता का भी है। गर्त में जाती पत्रकारिता यूं तो भाषाओं की सीमा को नहीं पहचानती, लेकिन इस दौर की पत्रकारिता का जब इतिहास लिखा जाएगा तो हिंदी के टीवी पत्रकारों के लिए अलंकार ढूंढने मुश्किल होंगे। साथ ही मैं इस अवसर का इस्तेमाल करना चाहती हूँ ये अपील करने के लिए कि टीवी के पत्रकार अपने पाठकों और दर्शकों के प्रति अपने कर्तव्य के बारे में एक बार फिर से जरूर सोचें। So is independent journalism dead in India? This may be largely true for media controlled by big money and the government. But the fact is that there are many journalists who are ready to stake everything to fulfill their duties, and there are millions of people who have been coming forward to support independently run media houses like The Wire. This is proof that the public wants free media and is willing to put its faith and money into it. So precisely this model of a public supported media organization is the future of journalism in the largest democracy of the world. Once again, thank you very much for this honor. I want to dedicate this award to the people of Kashmir and the women of Shaheen Bagh who have been the single largest influence on my journalism this year. I also want to thank the Wire's editors for providing me the platform and having faith in my work, and I want to thank all my colleagues in our small but stellar video department. And last but not the least, my family that has been a pillar of strength for me, my parents, my husband and my children. It wouldn't have been possible without their support.